Hi students, welcome to my channel. In this channel we provide the in-depth knowledge of different programming languages like C, C++, Java, Python, which differentiate you with others. In our series of Python for class 12, we have already uploaded the 9 lectures. Today we are going to discuss the 10th lecture, in which we will discuss two topics, loop else, and second one is nested loops. After going through these two topics, we will see some 4-5 practical programs. So let's start loop else. The Python, this is not available in C and C++. This is new in Python. Means we can have a else block with the loop also. Nothing special about for. We can specify with the help to the while loop as well as for loop. The Python loops have an optional else clause. What does it mean? If loop is terminated normally, then else block will be executed, and if it is terminated using break statement, then else block will not be executed. For variable in sequence, statement 1, statement 2, else statement 3. Same with the while test condition, statement 1, statement 2, else statement 3. The else block will be executed when the loop terminates normally, means when the condition will be false, the control comes down to the, usually if we are not specifying the else block, the control goes to the next statement after the body of the loop. But when we are specifying the else block with the while loop or a for loop, when the loop terminates or when the condition false, the control comes to the else block. The else block will be executed when the loop terminates normally, that is when the condition result is into false, not when the break statement terminates the loop. Means if the loop is terminated using break statement, then while loop will not, else part will not be executed, otherwise it will execute it. See here, for a, let's take an example. For a in range 1, 4, if a modulus 8 is equal to 0, what does it mean? For a in range 1 to 4, so how many times this loop will execute? As we have already discussed in the last class, from 1 to stop minus 1, that is 1 to 3. If a modulus 8 is equal to 0, then break printf a, else ending loop after the elements. तो ये जब भी a की वैल्यू 8 होगी, a की वैल्यू कभी 8 a मॉडुलस 8 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी 1 मॉडुलस 8 इक्वल टू 0, तो आपका ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो प्रिंट डिस्प्ले करता रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? So this point is very important. Which one? The else block will be executed when the loop terminates normally, when the condition result into false, not when the break statement terminates the loop. Fine. Next one is nested loop. A loop may contain another loop in its body. This form of a loop is called nested loop, but in nested loop, inner loop must terminate before the outer loop. Nothing special about. As we have already discussed in the last class, once the control enters the loop, the only exit point, either it encounters the break statement or the condition become false. Otherwise, it will go into infinite loop. The same thing what we are seeing here. The inner loop must terminate before the outer loop. तो अगर कंट्रोल पहले आपका आउटर लूप होगा, आउटर लूप से एक इनर लूप में जाएगा, कंट्रोल तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक इनर लूप आपका टर्मिनेट नहीं होगा. गेटिंग माय पॉइंट? हियर फॉर i in range i, 1 to 6, for j in range 1, I, print asterisk and equal to space print. In nested loops, a break statement will terminate the very loop it appears it. If break statement is inside the inner loop, only the inner loop will be terminated, the outer loop will continue. If break is in the outer loop, it will terminate the outer loop. As we have already discussed, whenever a break keyword is encountered in a loop, तो जिस लूप के अंदर ब्रेक यूज हुआ होगा वही लूप को टर्मिनेट करेगा. इट विल नॉट टर्मिनेट द आउटर लूप. अगर आउटर लूप के अंदर होगा तो नो डाउट इट विल नॉट गो इनटू इनर लूप, आउटर लूप ही टर्मिनेट होगी और बाहर आ जाएगा.
और अगर इनर लूप के अंदर अगर ब्रेक यूज हुआ है तो इट विल ओनली टर्मिनेट द इनर लूप, इट विल नॉट टर्मिनेट द outer loop. Outer loop will continuous. If it is in the outer loop, it will terminate the outer loop. तो this is how nested loops. Nothing special about कि for के अंदर आपको for use करना है. You can use for के अंदर while के अंदर for के अंदर any combination will work out. Nested loop means a loop inside a loop becomes a nested loop. जैसे nested if else पढ़े थे वैसे आपका nested loops है. So this completes our loop chapter. We have already discussed what is loop else statement, and second one is what is nested loop. So I think we should stop here about the theory part. Let's try to see some practical questions. Now here is small program which receive three set of values of principal rate and time and calculate the simple interest. What is the formula of the simple interest? P into R into T divided by 100. So here we are scanning three sets of values, means we will execute the loop 3 times. तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, I equal to 1 while I is less than or equal to 3. तो जब तक I की वैल्यू 3 से कम है तब तक ये लूप को एग्जीक्यूट करते रहिए. जैसे I की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा. 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 3 के लिए एग्जीक्यूट होगा. आई की वैल्यू जैसे 4 होगी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, लूप विल बी टर्मिनेटेड. इन वाइल लूप व्हाट वी आर राइटिंग, we are scanning 3 values and with the help of float type function we are converting a string into float. Why? Because input returns the वैल्यू इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट. तो फ्लोट को में अपन उसको कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोट टाइप फंक्शन, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम. वी आर स्कैनिंग 3 वैल्यूज एंड विद द हेल्प ऑफ SI is equal to P into N into R divided by 100 we are calculating this simple interest and displaying the simple interest. The simple interest is rupees SI. Then we are increment the value I is equal to I plus 1. अब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 2 is less than equal to 3, condition satisfied. Again it will scan 3 values and calculate the simple interest and it will display. I की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 is less than equal to 3, condition satisfied. Again it will scan 3 values and calculate the simple interest and it will display. Now I is equal to I plus 1. I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, is 4 is less than equal to 3, condition false. The loop will terminate and the program terminates. So here we are executing this set of statement how many times? 3 times. Now why we are executing 3 times? Because this is a requirement of the application. Nothing special about why we are using while loop, why we are executing 3 times. It depends कि क्या requirement है आपके एप्लीकेशन की, उसके हिसाब से you have to put the logic using the tools available in the language. Getting my point? Let's try to execute this program. Here we are having 100, 2, 3. Simple interest is 6. Again it is asking for value 200, 5, 6. Simple interest is this. Then again it is asking for some value. So this is how this program executes. Fine. Next one is enter one number and check the enter number is prime or not. We will not go through this program. First we will go to this program. Program that prints number from 1 to 10 using infinite loop. All numbers get printed in the same line. So now what is your requirement of this application or the program? You have to print a number from 1 to 10 and all the numbers should be displayed in the same line. Fine. तो I इक्वल टू 1 while 1 मतलब 1 इज नॉन ज़ीरो मतलब ट्रू मतलब वो इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा. तो जब कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी तो हाउ लूप विल बी टर्मिनेट. तो देयर आर 2 ways टू टर्मिनेट अ लूप. एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखिए, 2 ही तरीके से आप लूप से बाहर आ सकते हो. पहला तरीका क्या है, या तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए, और दूसरा तरीका क्या है, या तो उसको ब्रेक कीवर्ड एनकाउंटर हो जाए. कोई दूसरा तरीका नहीं है कि अब लूप से बाहर आ सको. तो नाउ इन दिस प्रोग्राम while 1 मतलब
ऑलवेज इट विल बी ट्रू, तो इट विल गो इनटू इनफाइनाइट लूप. हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंट आई की वैल्यू कितनी है 1 एंड इक्वल टू स्पेस, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एंड इज \n, क्योंकि अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि एंड में क्या डिस्प्ले करना है, एंड इज अ पैरामीटर गिवन इन द प्रिंट फंक्शन. अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक एज \n, जो कि नेक्स्ट लाइन पे हो जाएगा. अब दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑल द नंबर शुड बी प्रिंटेड इन द सेम लाइन, तो इसलिए हमको एंड इक्वल टू स्पेस देना पड़ा. देन i प्लस इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू i इज इक्वल टू i प्लस 1. तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. इफ i इज ग्रेटर देन 10, i की वैल्यू कितनी है 2. 2 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स, तो अगेन इट विल गो टू प्रिंट i. अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिस्प्ले करेगा. अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11. इस 11 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन सेटिस्फाई, ब्रेक. जैसे ब्रेक होगा कंट्रोल आपका बाहर आ जाएगा, तो आउटपुट विल बी 1 to 10 इन द सेम लाइन. Now see this point, while one creates an infinite loop while one creates an infinite loop as I is a non-zero value, hence true. Replacing one with a non-zero number, वो कोई भी नंबर हो सकता है, you can write 6, 7, 8, 9, 10, any non-zero value is a true value. या तो फिर आप सिंपल क्या लिखिए, while true is a keyword. Replacing one with any non-zero number will create an infinite loop. Another way of creating an infinite loop is while true. तो while क्या लिख लीजिए, true. 1 की जगह true भी लिखोगे तो भी वो it will go treated as a infinite loop. Then end equal to space in print space after printing I in each iteration. Default value of end is new line. By default it will have \n है. \n मतलब वो न्यू लाइन में कर्सर को मूव कर देता है. बट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन इज all the numbers should be displayed on the same line, so we have to override the default value \n to space. Let's execute this program. So this is the output from 1 to 10. Fine. Now let's see another program. Now this is a small program to display all the alphabets in upper and the lower case. मतलब एक लाइन में आपको ABCD डिस्प्ले करना है, दूसरी लाइन में आपको डिस्प्ले क्या करना है, ABCD in small letters. So what we are writing for alpha in range 65 to 91. Now what is 65 to 91? 65 is an ASCII of a capital A, American Standard Code of Information. तो वो क्या करता है, क्योंकि ABCD कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं, एवरी कैरेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू ASCII एंड दैट ASCII इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी एंड दैट बाइनरी इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी. गेटिंग माय पॉइंट? तो ASCII ऑफ कैपिटल A is 65 एंड कैपिटल Z is 90 एंड द ASCII ऑफ स्मॉल a is 97 एंड कैपिटल स्मॉल Z is 122. तो व्हाट वी आर राइटिंग फॉर अल्फा इन range 65, 91, print character alpha, and equal to, print for alpha in range 122, 96 minus 1, print character alpha and this and this. Let's check out the output. Now this is your output from capital A to capital Z with small z to small a. Now for is a loop, alpha is a variable in range 65 से 91 तक चलेगा, start to stop -1, तो वो 90 तक चलेगा. तो 65 is an ASCII of capital A and 90 is an ASCII of capital Z. Print alpha, alpha भी integer value, उसके अंदर पहले 65 आएगा. That 65 will be converted into character with a function called CHR. जैसे int एक function है, float एक function है, CHR एक function है, और एंड में क्या देगा, वो कॉमा देगा, मतलब प्रिंट करने के बाद एक कॉमा डिस्प्ले करेगा. और उसके बाद ये लूप चलने के बाद फ्रॉम A to Z डिस्प्ले करने के बाद वो क्या करेगा, प्रिंट, मतलब नेक्स्ट लाइन में आएगा. फॉर अल्फा इन रेंज 120 to 96, तो ये उल्टा रिवर्स डिस्प्ले करेगा. दैट इज वाई सी द आउटपुट. आउटपुट इज फ्रॉम स्मॉल z टू कैपिटल A. तो 120 to 96 और वापस कैसे चलना, -1 करते हुए चलना है. प्रिंट अगेन अल्फा कैरेक्टर एंड कॉमा और लास्ट में प्रिंट.
Getting my point? So here we are 65 is an ASCII of capital A and 90 is a ASCII of capital Z. For small letters it is having 97 to 122. Okay, so this is your program for getting the to check whether the number entered is a prime number or not. You just take this snapshot and try to understand yourself. If any doubt, you can ask me in the comment box. I will try to reply the answer as early as possible. So these are the some programs that we have discussed. I think we should stop here. We will start a new chapter in the next class, or we will have one more practical question or some questions we will try to solve in the next class. Thank you very much. If you like the content of this channel, please like, share and subscribe as much you can. It will motivate us. Thank you very much. Have a nice day.